Hello guys, welcome back to the channel of RTL Forge and I will explain our Verilog project is SPI Protocol. Let me some explain our SPI overview. First, the full form of SPI is equal to Serial Peripheral Interface is a high speed and full duplex synchronized serial communication protocol. It uses four main lines, serial clock and master output and slave in. This is known as MOSI, master in and slave out, MISO, and chip select and slave select is equal to CSSS. I will explain previous session UART protocol and I2C protocol. I2C is use our 2 pin serial clock and serial data, and our UART is equal to also 2 pin use in transmitter and receiver TX and RX, and SPI protocol is our 4 pin. Let me some explain our 4 pin is equal to SPI to master into this connector or many slave SPI. These are the SPI signals of the serial clock is a master to slave provide them serial clock generated by master. MOS is a master to slave data from master to slave, and MISO is equal to always slave to master data from slave to master. These are CS chip selected and slave selected provides some chip selected to active low and मतलब कि देखो जो सीरियल क्लॉक है वो मास्टर प्रोवाइड करेगा स्लेव को देने के लिए. मास्टर टू स्लेव जाएगा तो MOSI मास्टर ऑन एंड स्लेव इन, स्लेव टू मास्टर जाएगा तो मास्टर इन एंड स्लेव ऑन आउट, एंड मास्टर स्लेव में चिप सिलेक्ट करेंगे. अगर CS1 होगा तो चिप में चला जाएगा स्लेव टू डेटा ट्रांसफर होके, एंड 1 होगा तो नहीं जाएगा. दिस आर सिंपल फंडा ऑफ द SPI प्रोटोकॉल. हाउ द SPI वर्क्स, मास्टर पुल्स द CS लो टू सिलेक्ट अ स्लेव and the master generates the clock of the serial clock on each clock cycle, and master sends data on MOSI and at the same time slave sends the data on MISO. मैंने बताया ना ऊपर कि जैसे मास्टर TX में को देगा वो वही वैसे स्लेव RX में स्टोर हो जाएगा. This our data transfer is a full duplex and after 8-bit transfer, and master pulse of the CS high to end communication. This is our clock pulse. This is a random example of how it is SPI works. These are provide some age rising age mode is equal to 0 1 2. These are another video, and this is our SPI mode 0 and timing diagram. This is a simple diagram of what is serial clock run and MOSI and MISO one run. This is our always rising edge provide MOSI run, and falling edge data is our change in MISO pin. Provide some data is change on falling edge, and data is sample on rising edge. The rising edge. These are SPI master clock provide them clock reset start, and TX data is your actual data, and these are provide some RX data done and VG. Done and VG is equal to represent of the 0 and 1 also, and these are serial clock MOSI pin CS when the chip selected MISO. These are both, and these are SPI slave only. CS chip selected pin always high रहेगी इसमें. serial clock MOSI pin अवर RX डेटा एक्चुअल डेटा स्टोर होगा डेटा वैलिड के अंदर, एंड MISO पिन वो हाई रहेगी. टेस्ट बेस्ड सिनेरियो जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वेरिलॉग कोड में वही है. मास्टर सेंड इज इक्वल टू 1010 एंड स्लेव सेंड इज इक्वल टू 1100. आफ्टर ट्रांजेक्शन स्लेव के पास रिसीव आ जाएगा 1010 एंड मास्टर के पास आ जाएगा 1100. दिस इज सिंपल फंडा प्रोवाइड सम वेवफॉर्म, एंड feature of the SPI is equal to full duplex, high speed, no acknowledge, and other master controller and multiple slaves are included. Application of the flash memory, EEPROM, ADC to DA2 converter, DAC converter, SD cards. These are most important of the SD card. Okay. Advantage of the high speed and low efficient and project module. Let me some explain our Verilog code in SPI master. These are Verilog code even SPI master. First is equal to module, and these are a module name of SPI master. There's a input wire provide some clock and reset. This is a basic pin is included in your SPI master. These are input wire provide some data store in the TX data, and this is a start condition. Input wire and the MISO master in and slave output pin. This is our output register is equal to who provide some MOSI pin and serial clock जो मास्टर से जनरेट होगी, and this is CS pin provide some chip selected pin, and these are
आर एक्स डेटा बिजी एंड डन, बिजी 1 तो रनिंग होगा, अगर 0 होगा तो वो आइडल में रहेगा. ओके, लेट मी सम एक्सप्लेन. शिफ्ट रजिस्टर इज इक्वल टू टेक शिफ्ट एंड आर एक्स शिफ्ट. ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, मैंने I2C में दिखाया था कि शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आगे की वैल्यू स्टोर होती है. जैसे ही मास्टर टू स्लेव में आता है डेटा, तो वो 1/1 बीट स्टोर होता है, नहीं कि एकदम डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा 8 बीट का. वो 1/1 बीट और डेटा शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू स्टोर होता है. इसकी इसीलिए हमें टी एक्स शिफ्ट एंड आर एक्स शिफ्ट यहाँ पे यूज़ करें. बीट काउंट 4 बीट एंड एसपी क्लॉक डिवाइडर क्लॉक काउंट करेगा. ये तो बेसिकली let me some explain our reset pin all 0 and these are state diagram of ideal SPI transfer and last bit complete and stop. Let me some explain one by one. First is equal to start transfer is equal to ideal. Start provide some start and busy is equal to 1, मतलब कि अभी वो रनिंग करेगा एंड busy is equal to 1. CS चीप पिन तो ऑलवेज 0 रहेगी, ये तो हमेशा स्लेव में ही ऑन रहेगी, क्योंकि तभी वो कंज्यूमर को डेटा चाहेगा, डेटा चाहिए होगा, तभी वो बनेगी. दिस आर टी एक्स शिफ्ट प्रोवाइड दम टी एक्स डेटा एंड register shift is equal to 0 and bit count is equal to also 0 and clock count is equal to also 0. And MOSI is equal to data transfer is equal to 7 bit and serial clock is equal to also 0. यहाँ से अब दिस इज मेन लाइन, मेन कोड इज रन SPI ट्रांसफर फर्स्ट इज इक्वल टू बिजी एंड देन प्रोवाइड सम क्लॉक काउंट इज इक्वल टू क्लॉक डिवीजन -1. इसमें क्या क्या क्लॉक काउंट है, जो है जो मैंने राइसिंग एंड फॉलिंग का जो बताया था, उस काउंट के हिसाब से बिट स्टोर हो रही है. हाई टू लो के हिसाब से, हाई हो रही है तो स्टोर, तो उसमें 1 बिट आएगी एंड देन लो हो रही है तो उसके पास 0 आ जाएगी, बिट स्टोर हो जाएगी. दिस इज अ सिंपल फंडा ऑफ द SPI प्रोटोकॉल. Last bit is completed of BG prod is equal to also 0 done and then 1 and CS is equal to also 1 and RX data is equal to shift and RX shift. RX data जो RX shift में 1/1 हो जाएगा शिफ्ट. This else condition is very important in SPI. फर्स्ट इज इक्वल टू बिट काउंट इज इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1, मतलब कि जो बिट काउंट है पहले, उसके अंदर एक एक बिट है वो रजिस्टर थ्रू ऐड होती जाएगी. रजिस्टर 7 बिट का है, उसको 0 एंड 1 बिट ऐड होती जाएगी, जो ऊपर से आएगी सेंड अवर एक्चुअल डेटा, मतलब कि यहाँ पे जो सेंड है बिट काउंट, वहाँ से जो डेटा आएगा मास्टर के थ्रू और SCL थ्रू, वो डेटा यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा 1/1 एंड वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, TX शिफ्ट के अंदर. एंड वो TX शिफ्ट है वो MOSI का काम है. MOSI इज इक्वल टू बेसिकली मास्टर लाइन ऊपर स्लेव को डेटा स्टोर करेगा और स्लेव जो है वो लाइन के ऊपर मास्टर को डेटा स्टोर करेगा, वो MISO पिन है. ओके, एंड लास्ट इज इक्वल टू क्लॉक काउंट इज इक्वल टू क्लॉक काउंट प्लस 1, जो मैंने these are clock count is equal to very normal pin. Okay, these are module declaration of test bench code is written in by hand in our EDA playground. This is a module declaration of the TB SPI master whatever. These are test bench signal provide the register. This is the input known as our Verilog code. Your wire provided some output pin, provide an output in our represent by wire. The dot operation provide the correct to test bench code and Verilog code in wire. This dot operation always clock to clock, reset to reset and vice versa. And this provide some 10 ns की यहाँ पे क्लॉक जनरेट कर रहे हैं. क्लॉक होने के बाद वो रिसेट हो जाएगी. रजिस्टर स्लेव डेटा एंड स्लेव शिफ्ट. ओके, दिस वर चेंज द MISO ऑन क्लॉक फॉलिंग एज एंड मास्टर सैंपल MISO इज इक्वल टू राइसिंग एज. दिस सिंपल फंडा ऑफ है कि जो MISO चेंज करेगा तो वो सीरियल क्लॉक को फॉलिंग एज चला जाएगा और मास्टर सैंपल्स को राइसिंग एज कर देगा. ओके, दिस आर MISO इज इक्वल टू स्लेव शिफ्ट इज इक्वल टू 7 बिट एंड स्लेव शिफ्ट इज इक्वल टू ऑल्सो slave shift is equal to 7 bit and then this bit is equal to added into 1/1 0 1 0 1. Okay, the main test is a BCD and the data store is equal to represent of BCD file and EP waveform. This is the first condition is equal to initial value reset condition
okay, and then reset is equal to on, provide some data is equal to first data to transmit our 1010 and 110. This is a very important line because PV में हमको यही दिखाएगा 1010 and 1100. Okay, slave data and 1100 and 00. This is our slave data and this is our TX data. Okay, and start is equal to 1 and start is equal to then job, and our program is equal to done, and then wait जो वेवफॉर्म है वो हाई हो जाएगा. दिस इज सिंपल. ईपी वेवफॉर्म सिलेक्टेड एंड आइकर्स वेरीलॉग and then run. This is very simple EP waveform represent in my EDA playground. These are busy always first, always 0 0 0, reset is equal to 1. रिसेट ऑपरेशन क्या है? वो इधर सिंपल है कि रिसेट 1 होगा तभी वो अपना जो रिसेट ऑपरेशन है वो चला रहा है. अगर रिसेट जब 0 होगा तभी ये जो SPI प्रोटोकॉल का है वो ऑपरेशन चलेगा. इसलिए फर्स्ट इज इक्वल टू 0 बिजी है एंड देन 1 हाई हो रहा है. ये कब तक हो रहा है? जब तक ऑपरेशन शुरू होगा चल रहेगा तब तक. जब क्लॉक is equal to 1010, and this is our serial clock, always data through transferred 1 by 1 bit. Okay, and this is our done pin provide some done all operation, provide some tick, and these are simple high bit. Okay, and MISO provide some 1, first is equal to 1 and 0. हम अपना जो MISO था कि वो अपना यहाँ पे TX डेटा में पहले स्टोर हो रहा है 10 10 11 00. Okay, 10 10 11 02. This is our line of MOSI, master to slave, and this is our line of slave data. Provide some MISO 1140 and 11. Okay, this is our 1140 and then 1. This is our MISO pin. Okay, and ये कैसे स्टोर है? ये स्लीव रजिस्टर से स्टोर होगा कि पहले 1010 का जो डेटा आएगा वो थ्रू होके स्लेव डेटा के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है. वो कैसे हो रहा है कि फर्स्ट जो 1000 है वो थोड़ा शिफ्ट होगा, देन 1100, एंड देन थोड़ा आगे शिफ्ट होगा, देन 11000, फिर 1 और एक 0 आएगा, फिर वो स्टोर होगा एंड देन 0 होगा, फिर देन और 0 आएगा एंड देन 1 हो जाएगा. दिस इज सिंपल स्लेव शिफ्टर का काम है, वही होता है उसका. दिस इज सिंपल रन ऑफ द SPI मास्टर EP waveform. लेट मी सम एक्सप्लेन अवर SPI slave Verilog code. Let me some explain our slave part of SPI. This is our module of module declaration and module name of the SPI slave. And these are our input port of our clock reset. This is a normal clock pin, input pin. This is our clock wire CS, synchronous serial clock, and these are MOSI, master out and serial in, master out and a slave in, and these are output register is MISO, master in and slave out. These are output register store the 8-bit data in easily RX, and these are done provide some all operation is equal to clear, provide some RX done is equal to high and then low. This is our register shifter is equal to RX and TX, bit count and clock previous. यहाँ पे प्रीवियस जो क्लॉक है वो स्टोर रहती है तो वो शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू उसको रिमूव करना पड़ेगा और जो एक्चुअल डेटा है उसको स्टोर करना पड़ेगा. दिस सीक्वेंशियल लॉजिक प्रोवाइड सम रीसेट ऑल पिन इज इक्वल टू 0 एंड सीरियल जो यहाँ पे मैंने ऑल पिन मास्टर में 0 रहते हैं बट RX डन जो पिन है वो तो 0 रहेगी. वो हाई कब होगी? जब कंप्लीट होगा तब. बट जो सीरियल क्लॉक प्रीवियस है उसको सीरियल क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, दिस SPI एक्टिव पिन इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू अभी लो है एंड देन वो हाई होगी एंड देन सीरियल क्लॉक एंड सीरियल क्लॉक प्रीवियस इज इक्वल टू हाई. शिफ्ट द डेटा रजिस्टर जो है वो MISI के थ्रू डेटा राइसिंग करेगा, राइसिंग एज के थ्रू वो रिसीव करेगा अपने स्लेव के अंदर. ओके, दिस आवर RX शिफ्ट
इज इक्वल टू आर एक्स शिफ्ट इज इक्वल टू 7 बिट एंड MOSI जो मास्टर में था वही डेटा उसको लेना है, तो वो MOSI के थ्रू वो डेटा लेगा। वो MOSI पिन वो मास्टर में जो इंक्लूड रहेगी वही डेटा इसके 1 by 1 आएगा। दिस अवर शिफ्ट ऑपरेशन के थ्रू आएगा वो। एंड देन आर एक्स डन इज इक्वल टू हाई एंड बीट काउंट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर फॉलिंग एज। वो जो है फर्स्ट राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज के बीच में ये काम होगा। फॉलिंग एज में क्या होगा कि जो TX का जो शिफ्ट रजिस्टर है वही TX का जो शिफ्ट रजिस्टर है वही डेटा उसको कंपेयर कराएगा जो RX में है, वही जो सेंड MISO के डेटा के थ्रू आ रहा है वही डेटा MISO इज इक्वल टू शिफ्ट इज इक्वल टू 7 एंड देन वही TX का शिफ्ट डेटा जो TX शिफ्ट प्लस जो आगे से 0 0 1 जो डेटा बिट एड हो रही है वही इक्वल है कि नहीं वो फॉलिंग एज में आएगा। दिस आर CS inactive pin and 0 and then MI is equal to 0 and our actual data is stored in our TX shift pin and our consumer is ready for slave 2 through for data. Okay, and this is our test bench code register wire and dot operation provide some all test bench code connect our real Verilog code clock generator reset and 0101 SPI clock is equal to serial clock 1 and 0 this is rising edge and falling edge. This is our send byte of the from master and slave received through the MOSI. Okay, एंड फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं बाइट सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए फोर फंडा लगता ही है। I इज इक्वल टू 7, I इज इक्वल टू greater than is equal to 0 and I is equal to I minus 1. ओके, एंड MOSI इज इक्वल टू डेटा इनपुट जो डेटा है वो एक्चुअल वो SPI क्लॉक पे रन करेगा। दिस आर टेस्ट एंड our VCD file is stored in our save and EP waveform run is our represent of our data is a test bench code. This our clock pin is equal to 0 and reset pin is equal to 1. CS our chief selected pin is equal to 1 and serial clock is equal to also 0 because reset pin is equal to 1. MOS is equal to 0. This reset pin is equal also 0 and then selected slave is equal to 0 and then send the byte of 10101100 and then wait 30 ns and then CS is equal to also high and then 20 ns and then finish. Okay, these are display line provide some display in our EP waveform. Let me some run. Let me some explain our EP waveform in SPI slave protocol slave part. This is our clock 0 and 1 and this is our CS pin always first always high and then low. Slave part is equal to always low and then high because ऑपरेशन के बीच के अंदर वो लो हो रही है एंड देन हाई हो रही है। दिस MISO पिन प्रोवाइड सम डेटा एक्चुअल डेटा इन एन MOS दिस ऑल्सो एक्चुअल डेटा। रिसेट पिन फर्स्ट इज इक्वल टू always 1 and then high. These are RX data store the data in our 10101100. First store is equal to always 0 and then 101100 then 10101100. This is our pin of MOSI master out and slave in. This is our actual pin run in our slave part and then RX done is equal to provide some all data is equal to slave and slave part and RX done is equal to also high and then low. This is our serial clock provide some output operation 1010 and these are actual run of the program and 1011101100. These are MOSI pin also 1010 then 1 then 1 and then 0 and then 0. This is our MISO में हमने 010101 डाला था, इसके अंदर 10101100 डाला। दिस अवर RX डेटा एंड स्टोर इन अवर वैल्यूएशन ऑफ हेक्साडेसिमल में आप देखोगे तो उसको AC में दिखाई देगा एंड बाइनरी में कोड में 10101110. दिस आर एक्चुअल रन ऑफ अवर स्लेव पार्ट एंड दिस इज ऑफ द correctly run all SPI protocol and this is the end of this session. Thank you guys.